यही हो हीन के मशीन आई एकदम अब हम तो डर के मारे हमारे बड़ा ही ना। In India, thousands of buildings, mainly those belonging to the Muslim community, are being destroyed using bulldozers in the name of justice. बीजेपी आरएसएस ये सब का ये कि सड़क धरेगी, अगर दंगा हो जाए, हिंदू एक गाल हो जाए, हमारा आरक्षण बढ़ जाए. This represents a new era in India, where the government's approach to justice has come to be symbolized by bulldozers that are crushing the ethics and regulations of India's constitution. This is a bulldozer rally that I see here in Gorakhpur. Literally a bulldozer rally. We are in Nuh, a district located in the northern state of Haryana. This place is notable for having a majority of Muslim population, where the harsh reality of swift demolitions has unfolded recently. This is Shahina. She told us she has been living with her family in this village for more than 30 years. She has 7 children and earns her living by raising animals in these hills. Her face reflects the pain caused by the sudden destruction of her house on the government's order. यही हो हीन के मशीन आई एकदम जब सामान वामान ना निकाल दिया, हम तो कहाँ भाई सामान निकाल दिया ना, इधर चलो लेडीज पुलिस भी इसमें। अब हम तो डर के मारे हमारे बड़ा ही ना। हाँ, सामान सट्टो जैसा भी हो, घणो थोड़ा अपना घर की समझो जैसे ही तोड़ दिया। हाँ, अब ये पढ़न समय से निकाल रहा, जैसे बखेड़ा हटा के, जैसे या मलबा हटा के। Not just Shahina, there are hundreds of such houses that were brutally destroyed here. Another resident named Kehkashan shares her distressing experience. She says that her home was unexpectedly demolished without any warning. As a result, children and other members of her family have been left with no choice but to sleep under the open sky. कोई 70 साल की उम्र हो रही है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? भाई सरकार से मांगा हमारा न्याय हुए, हमारा किसी बड़ा टेंट दुकान कोई ऐसी दे जहाँ हम अपना बच्चा ने लेके पड़ जावा। और कहा सरकार से मांग रहा, जैसे हम सरकार ने फेंक दी ना, सरकार की भी कमी जो हमें से फेंक दी ना। भाई आज चिड़िया का भी घोंसड़ो पावे, देख रहा हमारे बच्चा कोई घोंसड़ो है, बूंदावा तो लेके पन्नी जब बड़ू बच्चा ने लेके नहीं पन्नी भी पन्नी के तड़े बड़ा जान रात में बारिश आ गई, 2 तब भीजा रात 2 बढ़ा दी गया मैं घर पन्नी के तड़े। हम तो भैया मदद है चाह कर अल्लाह हमारी तय कर दे, जितनी हम पे करेगा तो वही भाई अल्लाह पाक का ही हुक्म है, अल्लाह पाक से हुक्म से हमारे परेशानी आई है। उनकी जानना से कोई ताकत नहीं, हम 30 साल ना हो गए कि रहते भुतेरा भंडारा हुआ, भुतेरा वे होवे कभी कुछ भी ना हुई। दुख हुआ जो चीजें हैं बेटा, दुख ना हुआ जा घर से ऐसे पड़ा। हाँ बताओ, कंजर कुंजड़ा पड़ा तो उनका भी वहाँ पे तंबू है, ये झोंपड़ा, ये न्यार को भुसरो, ये झोंपड़ी इन पे पन्नी इनका, ये देखो ना आप, फिर दुख नहीं हो रहा है। The BJP official says they are knocking down houses, shops and other structures because these people are living on lands that were occupied illegally. However, it's crucial to ask why this action is taken just after a clash when these residents have peacefully coexisted on this land for decades. It all started on 31st of July with a procession organized by the Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad numbering around 200 people. But what was meant to be a Jal Abhishek Yatra took a tragic turn when a violence erupted between Hindu-Muslim groups, resulting in the loss of 6 lives. Local residents report that Muslim youths turned violent following several hate speeches, threats and abuses from Hindutva leaders before the rally. In response, some Hindutva supporters carried out a series of attacks on Muslim-owned businesses, their homes and places of worship. Days after the clash, bulldozers arrived in Nuh, tearing down hundreds of structures. But questions arise about the legality of these demolitions, especially when no prior demolition orders were issued. Whenever clashes between communities erupt, it seems like the BJP government's response is to target individuals.
especially the less privileged, predominantly Muslims, as if they are solely responsible for the unrest. Qasim has been running a tea shop for years. His home and shop were recently demolished on the grounds that they were illegal. Currently, he is undergoing treatment of depression. एक तो टेंशन हो जाती है सर, एक जो थोड़ा मजदूरी चल रही थी वो भी बंद हो गई, घर बार या तोड़ दिए सर, टेंशन से हो ही जाती है सर। बच्चों को पोष पालन कर रहे थे, सही से खर्चा पानी निकल जाता था, अब सारा धंधा बंद हो चुका है। मेडिकल की वजह से मेरी सारी दुकानें टूट गई सर। थोड़ा तो असर दिमाग पर असर तो पड़ता ही है सर, नुकसान तो हो गया, काफ़ी सारा नुकसान। डॉक्टर ने क्या बोला अभी डॉक्टर ने बोला है कुछ दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर, अब बोला आराम मिल जाएगा दवाइयों से। People here also say that Muslims are being targeted and arrested even though they have nothing to do with this riot. अधर्म तो हो ही रहा है, जो हमारा मकान 9 में गिरा है जी मुसलमान का। अरे केस तो वो मोनू मानस भी तो गिरफ्तार करना, हिंदू भी तो गिरफ्तार करना, मुसलमान भी गिरफ्तार कर रहा। कसूर तो दोनों घासू है, कसूर तो उनका भी है जो ऐसा दंगा भड़का होते हैं। तो ये आपको लगता है कि उसी भाषण की वजह से वो वीडियो जो वायरल हुआ उसकी वजह से दंगा हुआ? हाँ, उससे हुआ है जी। मतलब बीजेपी आरएसएस ये सब का ही है कि षड्यंत्र है जी। अगर दंगा हो जाए, हिंदू एक गाल हो जाए, हमारा इलेक्शन बढ़ जाए। After strong protest across the country against the government's unilateral action, the state's high court intervened, raising concerns about the abrupt demolitions. It questioned whether this was an exercise in ethnic cleansing, particularly since most affected structures belong to Muslims. The narrative of suffering is not isolated to Nuh alone. Across India, civil society groups and many legal experts have noted a surge in violence and hate speech against Muslims since 2014, when the BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, came to power. राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। In states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Assam, which are governed by the BJP, bulldozers have become a symbol of quick justice. However, it raises serious concern whether these actions are justified. As we bear witness to these stories, it's clear that this isn't merely a matter of legality. It's about the people, their lives and their communities. Innocent individuals, primarily from the Muslim community, find themselves homeless and in despair.